Hey everyone, today we're going to be discussing the test of chapter oscillations in simple harmonic motions, right? The waves. Okay, so first question is the total energy of a block executing simple harmonic motion is it's independent of x, right? So its derivation is basically E equals 1 upon 2 m omega square a square, right? So you can see यहाँ पे कहीं पे भी x नहीं है, so it's independent of x, okay? Okay. In simple harmonic motion, acceleration will be maximum when the object is at mean position. Okay. So mean position पे acceleration सबसे ज़्यादा होती है. Sorry, maximum displacement. So mean position से वो जितना दूर जाएगा उतनी acceleration बढ़ जाएगी. Okay. For a stiff spring, the value of spring constant. तो अगर spring stiff है तो उसका जो spring constant है वो ज़्यादा होगा, right? Because उसको deform करने में और भी ज़्यादा टाइम में फोर्स लगेगा. ठीक है. सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो x इक्वल 0 पे मैक्सिमम होगी, राइट? और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम्स पे, ठीक है, मैक्सिमम होती है, राइट? सो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है यानी मीन पोजीशन है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सट्रीम्स पे मैक्सिमम होती है, राइट? सो के एंड एम एक्सप्लेन करेक्टली. The time period of a second pendulum on the surface becomes अच्छा surface of the moon becomes तो second pendulum में जो t है वो 2 होगा और surface of the moon पे जो g है वो 1/6 होता है ना, right? It's 1/6. तो आप replace करोगे g की जगह 1/6 लगाओगे और t जो है वो 2 लगाओगे तो you'll find time period जो कि हो जाएगा 2 power 2 under root 6. Okay. A force F equals 0.12 Newton is applied to a spring and the spring elongates by 3 centimeter. तो उसका spring constant क्या होगा? ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है, आपके पास F भी मिला हुआ है, आपके पास X भी मिला हुआ है, which is 3 centimeters, right? You'll convert it into meters, which will become 0.03 और इसको डिवाइड करोगे तो आपको 4 न्यूटन पर मीटर मिल जाएगा, right? In simple harmonic motion, the kinetic energy is maximum when again mean position पे kinetic energy सबसे ज़्यादा होगी. For simple harmonic motion, the acceleration is dash to displacement. The acceleration is directly proportional to displacement, है ना? कि जितना distance बढ़ता जाएगा acceleration बढ़ती जाएगी, जैसे कि हमने बोला कि वो extreme पे जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? And always directed towards the mean position, ठीक है? वो सबसे वो हर वक्त it's directed towards उसकी direction जो है वो mean position की तरफ होती है. An airplane is flying in a straight line at a constant altitude. If a wind gust strikes and raises the nose of the airplane, the nose will and uh, bob up and down until the plane eventually returns to station. So ये कौन सी? These are underdamped. ठीक है, ये जो position है, these are underdamped. Because see इसमें क्या हो रहा है कि raises the nose of the airplane, वो bob up and down हो रहा है ना? These are underdamped. ठीक है. If a pendulum is oscillating with a frequency f, then what is the frequency at which kinetic energy changes? तो वो 2f यानी 2 times frequency पे change होगी because देखें यहाँ पे frequency जो है वो 2 होगी ना, right? Because it's 1/2 time, ठीक है, तो frequency जो है वो 2 हो जाएगी, तो इस जगह पे kinetic energy change होगी. The force applied on a unit area to produce any change in the volume is called stress. Okay, this is the definition of stress. A shock wave is produced due to an earthquake, which अब देखें ये जो building को move कर रहा है, ठीक है, shock मतलब वो क्या कर रहा है, it's moving through a medium और इस तरह से कौन move करता है? Longitudinal waves require mediums, right, to move. This is a longitudinal wave. A wave which transfers dash by moving away from the sources is called so energy transfer करती है progressive wave, है ना? So इसलिए ये वाला correct है.
If the altitude is 200, intensity is 300, ठीक है, इनिशियली, और फिर अल्टीट्यूड हमने इंक्रीज कर दिया है 800 तक, तो इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है? तो वी हैव इंटेंसिटी 300, अल्टीट्यूड 200 एंड एम्पलीट्यूड इंक्रीज टू 800। तो पहले हम क्या करेंगे, विल कैलकुलेट के इंक्रीज कितना हुआ है एम्पलीट्यूड में, ठीक है, विच विल डू बाय 800 ओवर 200, ठीक है? तो हमें कितना मिलेगा 4, राइट, बिकॉज 200 टाइम्स 4 इक्वल्स 800, ठीक है? तो इंक्रीज ढूंढने के लिए इंटेंसिटी में विल यूज दिस फॉर्मूला, आई प्राइम जो कि इंक्रीज होगा लाइक लेटर इंटेंसिटी इक्वल्स इनिशियल इंटेंसिटी टाइम्स ए स्क्वायर, ठीक है? जो ए था हमारे पास 4 था, स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और टाइम्स इनिशियल इंटेंसिटी विच इज 300, दोनों को मल्टीप्लाई करते यू विल गेट फाइनल इंटेंसिटी विच इज 4800। Okay, if the speed of waves is 10 meters per second and frequency is 5, तो wavelength आप कैसे ढूंढोगे? V equals f lambda से, ठीक है? A special class of waves that does not need a material medium or so electromagnetic waves में कोई material required नहीं होता, ठीक है? A sound wave with a frequency of 343 travels through air. What is the wavelength? ठीक है, अब आपको स्पीड पता है साउंड की एयर में, है ना? फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, अगेन v equals f lambda से आप वेवलेंथ ढूंढ सकते हो। Which of the following is not exhibitable? So longitudinal waves में polarization नहीं होती, ठीक है? This is a property of electromagnetic or light waves, right? The speed of the sound in air is 332 meter per second. अब 22 डिग्रीज पे कितनी होगी, ठीक है? सो दिस इज द फॉर्मूला, vx equals vs जो कि ओरिजिनल जो हमारे पास है स्पीड साउंड की प्लस 0.61 टाइम्स t, राइट? सो t जो है हमारे पास 22 है, ओके? सो यू विल सॉल्व दिस एंड हमारे पास 345.2 आ जाएगा। Astronomers calculate speed of distant stars and galaxies using the following. तो डोपलर इफेक्ट होता है ना, जिसमें वो वेव्स भेजते हैं और फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, फिर उनको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? सो डिस्टेंस जो है लाइक टाइम और यू नो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। इन अ रिपल वेव tank 40 waves pass through a certain point in 1 second. So this is what frequency, right? कि अगर फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में कितना होता है ना, सो अगर एक सेकंड में 40 पास हो रही है तो 40 इज द फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ भी हमें मिली हुई है, तो स्पीड हम कैसे ढूंढेंगे? v इक्वल्स f lambda के थ्रू, ठीक है? इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट इज वाट per meter square, okay? If the wave interfere constructively, the amplitude would be greater than either of the individual, तो वो ऐड हो जाता है, ठीक है? और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उल्टा होता है, ठीक है? उसमें it's like lower than either of the individual waves. If the compressible medium has bulk modulus B and density P or rho, the Newton's formula of speed of sound in a medium is V equals under root B upon P, right? So this is given in your book and और ये आपको पढ़ लेना क्योंकि आपको आना भी चाहिए, ठीक है? Laplace correction में उससे बताया था कि compression और reflection जो है वो adiabatic process है, ठीक है? जबकि न्यूटन ने पहले कुछ और बताया था, ठीक है? And then Laplace ने आके उसको correct किया था। When a train whistling passes near you, तो basically क्या होता है? When the train is moving away, जब वो ट्रेन आपसे दूर जा रही है तो पिच ऑफ द साउंड कम होती है, ठीक है? और जब वो आपके पास आ रही है ट्रेन तो पिच ऑफ द साउंड इंक्रीज होती है, ठीक है? सो डिक्रीज और इंक्रीज होगा। The time period of wave is 1/4, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4 होगी ना, because it's supposed reciprocal of time period. How long does it take 20 complete waves to pass the point? ठीक है, यानी टाइम पीरियड पूछा है ना, बेसिकली 20 वेव्स का, ठीक है? तो 4 वेव्स पास 1 सेकंड में, ठीक है? बिकॉज वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? सो 20 पास होने के लिए कितनी होंगी? 5 सेकंड हमें चाहिए, ठीक है? सो इट्स 5 seconds. What is the wavelength if the frequency distance between a crest and immediate trough, ठीक है? तो एक crest और crest से crest तक क्या होता है? एक wavelength होती है ना, और crest और उसके सामने वाला trough अगर हम काउंट करें तो that's half the wavelength, right? तो उसकी पूरी वेवलेंथ ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? इसको डबल कर देंगे,
है ना, तो हमारे पास 30 होगा. A wave passes through a medium. Each particle of the medium performs 100 cycles, 100 complete vibrations in 5 seconds. ठीक है. Each particle performs 100 complete cycles in 5 seconds. तो इसकी frequency ढूंढने के लिए क्या करेंगे, 100 divided by 5, है ना, क्योंकि वो 1 second में पूछते हैं. Frequency is in 1 second, तो वो हमारे पास आ जाएगा 20. In periodic wave, the distance between second and fifth crest is 15 centimeters. ठीक है, तो मतलब ये कितने crest पास हो गए हैं, 2 से 3 तक एक हो गया, 3 to 4 is 2, and then 4 to 5 is 3, यानी 3 waves वो पास कर रहे हैं, तो उसकी 15 सेंटीमीटर लेंथ है. अगर हम उसको 3 से डिवाइड कर दें तो हमें एक वेव की मिल जाएगी, विच इज द वेवलेंथ, है ना, so that is 5, because 15 divided by 3 is 5. The frequency of traveling wave is 2000, its speed is 300, तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, अगेन v equals f lambda, आप उससे ढूंढ सकते हो. The points which are in phase are separated from one another through a distance of one wavelength, है ना. तो कौन सा phase में होता है, एक ट्रफ दूसरी ट्रफ के साथ वेव क्या होगा, phase में होगा ना. So they're divided by one complete wavelength. 20 waves pass through a point in a medium in 5 seconds. ठीक है. तो टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, तो फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो 4 होगी, ठीक है, बिकॉज विल डिवाइड 20 by 5. फ्रीक्वेंसी से टाइम कैसे ढूंढते हैं, हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4. What is the wavelength of the wave if the phase angle between 2 points is 3 pi over 4 and are separated by distance of 3? तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, 3 pi over 4, which is the phase difference, और 2 pi times distance जो कि 3 centimeter है, और lambda जो कि आपको ढूंढना है. So you'll solve for lambda or you'll get 8 centimeter. The number of vibrations executed in 1 second is frequency. Obviously, we've been using this throughout the test. A longitudinal wave, standing wave in second harmonic mode is established in the tube that is open at both ends. ठीक है, तो आपको लेंथ दी हुई है 0.8 और बताया कि सेकंड हार्मोनिक में है, तो वेवलेंथ कैसे ढूंढेंगे. सो रिमेंबर सेकंड हार्मोनिक में क्या होता है कि L इक्वल्स लेमडा, राइट, लेमडा 2. तो आपको L अगर बताई हुई है 0.8, तो वो किसके बराबर है, वो लेमडा के बराबर है, यानी वेवलेंथ के बराबर है, राइट. सो वही होगा 0.80 meters होगा. When the path between two waves are odd integral multiple of half the wavelength, so it's basically destructive में होता है ना, जब वो integral multiple half the wavelength होता है, that is यानी 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, these are all destructive interference. Okay. What happens whenever a transverse wave traveling in a denser medium is reflected from the boundary of the rarer medium? तो क्या होता है कि डायरेक्शन जो है वो सेम ही रहती है डिस्प्लेसमेंट में, इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन. इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होता है, डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है ट्रांसवर्स वेव की. A pipe is open at both ends, stationary is formed, which is true. यही कि the sum of number of nodes and number of antinodes is always an odd number. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर नोड एक है हमारे पास, ठीक है, तो एंटीनोड 2 होंगे, ठीक है, उनको ऐड करो तो हमेशा 3 मिलेगा. ठीक है, अगेन अगर आप नोड्स जो हैं वो 2 कर दो, राइट, तो एंटी नोड्स 3 हो जाएंगे, सो दिस बिकम्स 5, राइट. तो इस तरह से हमारे पास होता है, इट्स ऑलवेज ऑड. A stationary wave is formed and a pipe is open at one end. If the length is 5 centimeter, then what is the maximum possible wavelength of the wave? तो अगर लेंथ 5 है तो आप क्या करेंगे, 4 times 5 करेंगे, ठीक है, so you'll get what, 20. Okay, now we have English. The managing director, together with his heads of different departments, have been preparing a new budget. तो क्या has been होना चाहिए, because एक बंदे की बात हो रही है, managing director, so that is the error. The soldiers had to move west. Okay, this should be only west. Choose the correct option. Every man and every woman likes my father. He is the perfect gentleman. ठीक है, तो ये करेक्ट है. बाकियों में जो ये पंक्चुएशन ये गलत दी हुई है, ठीक है. Mary, who has 2 young children, has a part-time job in the library. So part-time में hyphen आना चाहिए, so इसलिए that is an error. Baffling, which means unsolved. ठीक है,
यानी something जो समझ में ना आ रहा हो, it's very like confusing, perplexing, ठीक है? तो उसको हम baffling बोलते हैं. Primary education in Sindh is in a poor shape. Pupils in over 50% of the schools read in the open throughout the year. Over 6 million children born to lower income group parents remain unlettered. Not even 1%, not even 1%. Acha, so the statement is the large number are one teacher schools. So that's true, right? क्योंकि उन्होंने बोला है. Um, where let me, new teacher have been appointed. हाँ, तो आप इनको divide करोगे ना, when you divide it, तो आप देखेंगे कि a lot of them have only like one teacher per school or one teacher is teaching everyone, right? And this is like work for the teacher too and also not very efficient. ठीक है? तो this is definitely true. अच्छा इसमें अगर हम देखें it's 1/3, 3/7. तो इसमें क्या हो रहा है 1 से 3, 3 से 6, 6 से 10 इस तरह से हो रहा है, राइट? और उसके बाद क्या आना चाहिए 15 के बाद ये 3 बढ़ रहे हैं, 4 बढ़ रहे हैं, 5, 6 बढ़ने चाहिए, राइट? तो 21 आएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4 बढ़ रहे हैं एंड देन 6 बढ़ रहे हैं एंड देन 8 बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे क्या आना चाहिए 43 आना चाहिए, ठीक है? 4, 6, 8, 10, 12, 12 बढ़ने चाहिए आगे. ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है कि यू हैव टू लाइक अरेंज देम, ठीक है, प्रॉपर्ली, और फिर आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो. ओके. All the schools in the area had to be kept closed for most part of the week. Many parents have withdrawn their children from the local schools. ठीक है, अब because हाँ, so because ये क्यों हो रहा है? Why are we closing? So these two are not related to each other, ठीक है? ये किसी और चीज की वजह से ये हो रहा है, किसी और चीज की वजह से हो रहा है. So these are both effects, ठीक है? लेकिन उनका काज जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. सो देयर द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉजेस, ठीक है, लाइक और मे बी लाइक कॉमन कॉज बिकॉज सी जिस वजह से स्कूल बंद हुए हैं मे बी उसी वजह से विथड्रॉ किया हुआ है ना. सो देयर आर इफेक्टिव common cause, ठीक है, which is not given here. A large number of people die every year due to drinking polluted water during summer. ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं? The government should make adequate arrangement and to provide safe drinking water, which is true, right? The people should be educated about dangers. ये भी true है, ठीक है? So both of them follow, right? So that is it for this test.